Hello everyone, I hope you all are fine, and today we are going to discuss about another topic of psychology, that is the schools of thoughts in psychology. So there are many schools of thoughts in psychology, but in this video we will only discuss about the structuralism. So as the name shows, structuralism, structure is actually related to the structure of anything. It must be related to the structure of anything. So it uh, first of all we talk about the origin of this school, and this is the first school in school of thought in psychology. It was developed by the William Wundt in 80s, and Edward P. Titchener is also strongly associated with this school of thought. Basically, Edward Titchener was the student of William Wundt, and William Wundt also considered as a father of psychology. So this is the first school of thought, and of course this is a very important school of thought. So as the name shows that there in this school of thought, it is actually talking about the structure of anything. So structuralism was the first school of thought in psychology at the and focused on the breaking down the mental processes into the most basic components. तो बेसिकली जो स्कूल ऑफ थॉट का जो फोकस था वो ये था कि जो तमाम मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में पढ़े थे कि मेंटल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, हमारी परसेप्शन है, हमारी इमेजिनेशन है, आइडिएशंस हैं, इन्होंने इनका फोकस इस पे था कि वो उनको ब्रेक डाउन करे, उन सारे लाइक परसेप्शन है अगर तो उसको ब्रेक डाउन करे, जितना उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है उसका मोस्ट बेसिक कंपोनेंट को इन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी बेसिकली. So psychology started emerging as a scientific discipline in 80s 79, when the William Ward German psychologist opened a first psychology laboratory in the University of Leipzig, Germany. So basically जो इसकी एज अ डिसिप्लिन, साइंटिफिक डिसिप्लिन जो शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की, वो विलियम वुड के ने की थी, और उन्होंने 1879 में जर्मनी लेम्पसिक में एक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया था, ओपन की थी, जो कि बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए थी. So William Wood considered as a study, Wood considered that psychology जो है वो एक study है सिर्फ as study of conscious experience की. According to the William Wundt, he said कि psychology सिर्फ हमारे conscious study of conscious experience है. So he focused on the components and the structures of mind. So one model became known as the structuralism because it focused on the fundamental elements that form, जो कि बनाते हैं क्या, foundation of thinking, consciousness, emotions and kind of other mental status and activities. So we can say जो विलियम वन का जो फोकस था वो फंडामेंटल एलिमेंट्स पर था, वो एलिमेंट्स जो कि बनाते हैं फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग. हम कैसे सोचते हैं, थिंकिंग की बेसिकली बुनियाद क्या है, हमारे कॉन्शियसनेस की बुनियाद क्या है, हमारे इमोशंस की बुनियाद क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. बेसिकली जो इसका मकसद था वो इस तरह से माइंड को या थॉट्स को स्टडी करने का था. So structuralists studied the mind by bringing the people into the laboratories and asking them to respond to a stimulus. For example, कोई भी उनको साउंड सुना दी जाती थी, कोई बेल सुना दी जाती थी, और वो उनसे कहते थे कि आप इस पर हमें रिस्पॉन्स करें, जो भी वो क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे. So data was collected through the method of introspection. Yes, this is very important point, that which was the method that William would use while conducting all these experiments. तो वो इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड था. इंट्रो मीन्स इनवर्ड और स्पेक्शन मीन्स अपनी स्पेक्शन करना. सो इंट्रो मीन्स द इनवर्ड एंड स्पेक्शन मीन्स अपने बारे में अपना जायजा लेना. सो विच इन्वॉल्व, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व थी, ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग वंस ओन कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस. कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ और मैं अपना एक
अपने आप को एनालाइज और अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को देख के ये सोच सकती हूँ, ये चीज़ें, ये थॉट्स मेरे माइंड में आ सकती हैं और मैं इसको देख के ये परसीव करूँगी. So this was done under the controlled condition, same physical surroundings, using the same stimulus and the same verbal instruction to the each subject. So एक बड़ी controlled condition थी और एक ही तरह के series of questions थे about the particular stimulus जो कि उनको show किया जाता था और एक ही तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी और उस पर उन्होंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना था, अपना जायज़ा लेना था कि इसको देख के मेरी ये परसेप्शन है, इसको देख के मेरे ये इमोशंस आ रही हैं. तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरलिस्ट का main मकसद था, to study the mind or the mental processes. For example, people were presented with a stimulus such as the bright green light object or the sentence printed on a card and asked to describe in their own words in as much as detail they can manage. So what they are actually, or they were actually experiencing. So इस school of thought को बहुत ज़्यादा criticism face करना पड़ा था because ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं था. इट वॉज नॉट वेरी मच साइंटिफिक. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अदर पीपल टू एक्यूरेटली वेरीफाई द इंट्रोस्पेक्शन मेड बाय द अदर पर्सन. कि अब जो मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, अब नेक्स्ट हु इज़ एक्चुअली ऑब्जर्विंग मी, वो इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा. People also had difficulties in describing some of their inner experiences, such as thoughts, emotions, and many responses. और इसमें ये था कि it was unable to apply on the abnormals or children's पे ये possibilities नहीं थी, like how we can analyze or know about their thoughts and their mental processes, and it was not valid, and it was not there were no objectivity in this method or in this school of thought, the way they are trying to study the mind or the conscious process, or there it was very subjective. Okay, so this was our first school of thought, that was the structuralism. So if you like the video, please share or subscribe. Thanks for watching.